12th AOC Study Circle meeting for 2022-23. I request all the members for the stand up for the ICA motto and put their right hand on. Aditya, please. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you, Aditya ji. Today's speaker and expert, Hemant Agarwal ji, past conveners and professional colleagues. Today we have the Zoom meeting on the topic Housing Societies AGM, Mandatory Compliances, Various Procedure, Auditing Documents and Minutes. And today we have the expert, Shri Hemant Agarwal ji. I am giving his brief introduction. Hemant Agarwal ji is founder and chief coordinator of chshelpforum.com, a platform for knowledge sharing dedicated to various issues that can be experienced in the housing society. He has 33 years experience as a legal advisor to cooperative housing societies, family property matters, and agriculture land acquisition project modalities and various department permission. He is law graduate from Jitendra Chauhan College in 1988. He is non-practicing advocate, legal strategist, researcher, writer, speaker, and environmentalist. On this note, I welcome Shri Hemant Agarwal. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. Should I start, sir? Yes, sir. Okay. I wish to thank your study circle and specifically CA Jitendra Kothari ji, CA Utkar Sharma ji, and CA Amish Sangui sahab. Before I start, my introduction has already been given to you. There's no need for further introduction. I'm going to speak on annual general body meeting. Key points applicable to AGM under section 75, 76, 81, 82 of the Maharashtra Cooperative Societies Act. There are of course rules also available. For example, section 75 is to be read with rule 61. For audit purpose, section 81 is to be read with rule number 69, and so. Because the topic is going to be very exhaustive, बहुत लंबा topic है. और चूंकि I am from Mumbai, you people are also from Mumbai, so we will be having a Mumbai language, I suppose so. AGM, that is annual general body meeting, is the most important and inevitable and mandatory annual duty of a cooperative housing society. Sometimes CHS do not conduct AGM for 2-3 years even. Various reasons hote hain. It is in my experience that this has happened. The deputy registrar that I address as DR, deputy registrar DR,
इन मुंबई सिटी, फिर उनको पेनलाइज करता है या पनिश करता है या डीबार कर देता है 5 साल के लिए, जो प्रोविजन सेक्शन 75 में मौजूद है। तो ये 2-3 साल तक एजीएम नहीं भी करते हो, ना किया, लेकिन अब आप नहीं कर सकते उस एजीएम को। अब आपको रिक्वेजिशन करना है फॉर एन authorized officer that can be duly appointed only by the DR, who will come, issue a notice of AGM under his own sign seal, and then conduct the AGM, wherein he will be the presiding officer. No member of the society will be the presiding officer for a meeting called by an AO. AO means authorized officer. कभी कभी देखा जाता है कि एजीएम के एजेंडा 2-4 के बजाय में 20-20 एजेंडा होते हैं। तो इस चीज को हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। द सेक्रेटरी इज लायबल टू स्ट्रेटेजाइज द टाइम कैलकुलेशन फॉर एजीएम एजेंडा एंड रेजोल्यूशन। जैसे एजीएम एजेंडा को रीड करने के लिए कितना वक्त लगने वाला है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए कितना वक्त लगेगा, डिस्कशन जीबी, जनरल बॉडी डिस्कशन जीबी, तो उसको कितना वक्त लगेगा डिस्कशन के लिए। अगर वोटिंग करना है तो वोटिंग को कितना समय जाना है, वोटिंग मीन शो ऑफ हैंड से। फिर किसी को प्रपोज करना है उस एजेंडा को, दिस इज मैंडेटरी। प्रपोजिंग एजेंडा, द वर्ड शुड बी रिटन स्पेसिफिकली प्रपोज्ड बाय अनिल शर्मा, सेकेंडेड बाय राकेश रोशन, एंड यू हैव टू राइट देयर पास्ड विथ माइनॉरिटी ऑब्जेक्शन। अगर माइनॉरिटी ऑब्जेक्शंस है तो यू हैव टू राइट देयर ऑब्जेक्टेड बाय राकेश, कॉमा, सुरेश एंड सो। और अगर ऑब्जेक्टेड नहीं है तो पास्ड यूनानिमसली, और अगर minority objections so then you have to write the keyword over there, passed with majority decision. The secretary should ensure, it is a duty of the secretary to ensure that a lengthy AGM proceeding should not be conducted. It serves no purposes. Members get frustrated and then they start showing out their outburst, frustration, aggression during the general body meeting, which is natural, and MC has to adjust and accept it normally. As per section 75 of the MCS Act, AGM is to be conducted on or before 30 September, let us say इस साल का लिया अगर तो 30 September 2022. As per a recent 2002 amendment, AGM extension for 3 months can be applied for before the DR, citing pandemic or any other valid reasons, and the AGM extension can be achieved. You have to give proper justification. The discretion to extend the AGM calling period is vested with the Deputy Registrar by virtue of this 2022 amendment. पिछले साल का जो एजीएम का क्राइटेरिया था पैंडेमिक के समय, तो एजीएम वाज एक्सटेंडेड फॉर 2021 अप टू 31 मार्च 2022 तक आप कर सकते थे। स्पेशल प्रोविजन दिया गया था और वो आप कर सकते थे। एजीएम का जो एजेंडा के जो पॉइंट्स है, तारीख है, वेन्यू है और समय, ये आपको एक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में डिस्कस करना है। पहले मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करना है, डिस्कस करना है कि ये हम फला पॉइंट्स एजीएम के एजेंडा होंगे। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग, दिस इज एजेंडा इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेक्रेटरी टिपिकली बिकॉज ही इज द इन चार्ज ऑफ द सोसाइटी अफेयर्स नॉर्मली। और बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स भी अपना सजेशंस चिप इन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये एजेंडा ऐड करना है, मेंटेनेंस बढ़ाना है, गार्डन की मरम्मत करनी है, उसका एजेंडा डाल दो वगैरह वगैरह। So it has to be definitely approved in an MC meeting. I'll just repeat: agenda, points, date, venue, and time is to be approved in an MC meeting. MC means managing committee. MC is the sole authority to decide on this thing. General body members have got no authority in this particular 4 points. However, एक आध महीने पहले अगर कोई जनरल बॉडी के मेंबर बोलता है कि आते समय में एजीएम बुला रहे हो, ये आप एजेंडा रखिए, तो मैनेजिंग कमेटी उस मीटिंग में कंसीडर करके फाइनलाइज करना या ना करना का डिस्क्रिप्शन मैनेजिंग कमेटी को।
मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में आप और एक भी डिसीजन ले सकते हो कि एजीएम में रिफ्रेशमेंट है, डिनर है, एक्सपेंसेस वगैरह जो होने हैं, हॉल की बुकिंग का होना है या होटल की बुकिंग का होना है या सोसाइटी के टेरेस में होना है या क्लब हाउस में होना है, जो भी जहां पर भी होना है, उसका जो एक्सपेंसेस है वो भी एमसी मीटिंग में सैंक्शन करना है. नॉट नेसेसरी कि एक लिमिट सैंक्शन करना है, बट यू कैन यूज ए वेग वर्ड दैट रिलेवेंट expenses for AGM meeting is hereby sanctioned. Managing committee is the sole administrative and governing authority in the society. This is covered under section 73(1), read with section 154(b)(1) bracket 9, and is entitled to invite outsiders for briefing or lecturing to the GB members, but only related to the AGM item. जैसे उदाहरण के तौर पे यू कैन इनवाइट लीगल एडवाइजर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जीएसटी कंसल्टेंट्स, लिफ्ट या पेस्ट या अदर एएमसी वेंडर्स. वो आएंगे. अगर एजेंडा है मानो कोई लीगल डिस्प्यूट का, तो लीगल एडवाइजर को इन्वाइट करो एज ए स्पेशल इन्वाइटी इन द नोटिस, से कि Hemant Agarwal is invited as a special invitee as a legal advisor to brief the general body on so and so issues. Here, general body has no authority at all to disallow or dispute presence of such special invitees. This discretion is vested solely with the MC because it is the sole administrative and governing body. Under section 75, there are minimum statutory requirements for conducting an AGM. जैसे उदाहरण के तौर पे AGM का नोटिस एजेंडा देना है 14 दिन पहले, मीटिंग का दिन छोड़ के 14 दिन पहले, बैलेंस शीट का सेट देना है, बैलेंस शीट में आपका बैलेंस शीट आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया, फुल सेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आ गया, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आ गया, जिसको हम टिपिकली ओ फॉर्म बोलते हैं. मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट साइंड बाय द चेयरमैन आ गया. आते साल के लिए, फोर्थ कमिंग ईयर के लिए बजट प्रोजेक्शन शीट आ गया. आपके कार्यकाल में आपने कितने मेंबरशिप ट्रांसफर किया है, तो उसका नया मेंबरशिप ट्रांसफर लिस्ट आ गया. आपके मैनेजिंग कमेटी में अगर सुझाव आया कि ये बायलॉज को अमेंड करना है, तो बायलॉज का अमेंडमेंट शीट लगाना है. एजीएम का एजेंडा में कंपलसरी है कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट का एजेंडा रखा जाए. और ये सारी की सारी चीजें, एजेंडा जो है, नोटिस एजेंडा है, you have to serve it to all members either via hard copy, and if you had taken prior permission in an earlier general body meeting, then you can serve these copies via email, via society apps जैसे अड्डा है, सोसाइटी हाइव है, और भी 3-4 एप्स वगैरह हैं. लेकिन इसका परमिशन पहले कभी लिया होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए रिजोल्यूशन में. यू कैन सर्व इट बाय पोस्टल ऑल्सो और बाय कोरियर ऑल्सो. जैसे उदाहरण के तौर पे आपके 25 मेंबर अमेरिका में हैं, ईमेल से सर्व कर दो, व्हाट्सएप से सर्व कर दो, बट इट इज पॉसिबल एंड इट इज लीगली एक्सेप्टेबल बाय लॉ. सो दिस इज द मोस्ट acceptable thing under section 27 of the General Clauses Act also. There are some High Court judgments also, if that any document served via hard copy, email, society apps, postal, courier, WhatsApp is a legally accepted service of delivery. Next, if AGM is not conducted on time and or if all documents, जैसे अभी ऊपर मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, are not given to general body, and or if all documents are not discussed and resolutions not recorded, that is, then under section 75(5), managing committee can be disqualified and debarred for 5 years from managing committee positions, plus a penalty of ₹5,000 would be levied on each managing committee and any officer of the सोसाइटी. ऑफिसर में आपका मैनेजर आ गया. अगर आपकी नॉन सीएचएस सोसाइटी है तो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह हैं, और जिनको आपने अपॉइंट किया हुआ है, वो सारे आ गए. और ये पेनल्टी जो है, या ये जो लिटिगेशन का जो कॉस्ट होगा, वो मैनेजिंग कमेटी के पर्सनल पॉकेट से जाएगा.
सोसाइटी के फंड से आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। और किसी कारण आपने एजीएम नहीं कंडक्ट किया हुआ है और कोई मेंबर डीआर को कंप्लेन करता है कि भाई सोसाइटी के एमसी ने एजीएम कंडक्ट नहीं किया हुआ है, देन DR has suo motu powers to appoint an AO to conduct the AGM, but that is after the prescribed due date of 30th September of the year. When you issue this document for AGM set, then you need to mandatorily take members' acknowledgement or relevant type of acknowledgement concerning your email, WhatsApp, courier, वगैरह must be preserved on society records. This is highly useful during times of disputes reaching courts. कोर्ट में गया मैटर, मुझे एजीएम का सेट नहीं मिला है, ये कॉमन कंप्लेंट्स है लोगों की, तो उस समय ये सारी चीजें जरूरी होती है। टिपिकली आई प्रिस्क्राइब के मेंबर का एक लिस्ट बना लो, टेबल बना लो, मेंबर का नाम लिख लो, फर्स्ट मेंबर का नाम लिख लो, फ्लैट नंबर लिख लो, सिग्नेचर का कॉलम बना लो और मोबाइल नंबर का कॉलम बना लो, और अगर आप फिजिकल दे रहे हो तो ये दे दो। एजीएम नोटिस पीरियड इज मिनिमम 14 days एज पर द बायलॉज। तो जिस दिन एजीएम होना है, मानो उदाहरण के तौर पे आपका एजीएम होना है 15 तारीख को, तो 15 तारीख को छोड़ के बाकी 14 दिन जो बचते हैं, 14 days जो बचते हैं, that can be used as the notice period. This notice period is not prescribed in the Act, MCAs Act or rules. It is prescribed in the bylaws. But the society, being an autonomous functioning body, can make changes in the bylaws to amend this period, this notice period. तो किसी एजीएम में आप नोटिस पीरियड का अमेंडमेंट ले आओ, अमेंड करो, सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 के अंदर बायलॉज के अमेंड करने का प्रोविजन है। आप उसके अंदर उस नोटिस पीरियड को 7 दिन कर लो, 14 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, जो भी आपका जनरल बॉडी डायरेक्ट करेगा वो, यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू डू दैट। एजीएम कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन इवन ड्यूरिंग नॉन पैंडेमिक पीरियड, since the sole discretion to decide venue is vested with the managing committee, who is the administrative and governing body. There is no need for any permission from GB, general body, or DR, or any authority for these purposes. More specifically, since society is declared as minimum statutory requirement for AGM agenda under section 75 read with rule 61. MC meeting should deliberate and approve the notice agenda for AGM. This is important in events of any futuristic disputes reaching authorities या कोर्ट्स। अब कोर्ट्स में यहाँ पे 4 कोर्ट लागू पड़ जाते हैं सोसाइटी के लिए, एक कोऑपरेटिव कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। अब इन चारों कोर्टों में सोसाइटी के विरुद्ध में मैटर फाइल कर सकते हो। आपका जो बैलेंस शीट है, इट शुड बी ऑडिटेड एंड साइंड, स्टैम्प्ड ऑन और बिफोर 31/7/2022। उस साल, जिस साल में आप एजीएम करने वाले हो, उसमें 4 महीने के अंदर ही आपका ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइन एंड सील्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को बैलेंस शीट पे तभी सिग्नेचर करना है जब मैनेजिंग कमिटी की ऑफिस बेयर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वहां पे साइन कर दे। ऑडिटर शुड नॉट साइन द बैलेंस शीट विदाउट ऑब्टेनिंग सिग्नेचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफिस बेयर्स। Full audit report set. Auditor should check the GB minutes जब आप full audit report. Audit report में auditor को क्या क्या कवर करना है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को देखना है जनरल बॉडी के मिनट्स, पिछले जनरल बॉडी जो हुए या उसके और पहले के, जैसा डिपेंड होगा। जैसे मैंने मानो एक 10 रुपए का वाउचर है, उसका खर्चा
मे भी 2 साल के पहले जीबी की मीटिंग में सैंक्शन किया होगा, वो चेकआउट करना है कि भाई खर्चा जीबी ने सैंक्शन किया था नहीं किया था। फिर मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स कि ये तो 10 रुपए का जो खर्चा हुआ है वो खर्चा कौन सी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में सैंक्शन हुआ था, उसका वाउचर और उसका बिल, रिलेवेंट टीडीएस, रिलेवेंट जीएसटी, ये सारे चेक करने हैं। ऑडिटर हैज टू चेक द मैंडेटरी रजिस्टर्स। इस उदाहरण के तौर पे आई रजिस्टर हो गया, जे रजिस्टर हो गया, शेयर रजिस्टर हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, रिपेयर फंड हो गया, रिजर्व फंड हो गया, फंड रजिस्टर्स हो गए, मॉर्गेज रजिस्टर्स वगैरह हो गए। अब मैंडेटरी रजिस्टर में जैसे आपने ऑडिट किया, बैलेंस शीट में आया कि 50 रुपया सिंकिंग फंड का आया हुआ है और 50 रुपए की एफडी किए हुए, तो सिंकिंग फंड के रजिस्टर में ये चेक करना है, इन्वेस्टमेंट फंड के रजिस्टर में ये काउंटर चेक करना है। Auditor also has to check the various legitimate contributions made by members. I'm using the word legitimate contributions. कई सोसाइटी में एक फितरत है, आदत है, हैबिट है कि कुछ भी कलेक्ट कर लिया जाता है जनरल मेंबर से, जरूरत पड़ी तो उसको ये पेनल्टी लगा दिया, गुस्सा आया तो ये लीगल चार्जेस लगा दिया, एंड सो इट हैज आल्सो टू चेक फॉर वेरियस लीगल चार्जेस, legitimate charges to members by MC. I'll just repeat the whole thing. Various legal legitimate contributions made by members, various legitimate charges to members by MC, legitimate or illegitimate spending, legal or illegal spendings by managing committee, report on the various illegalities. जैसे उदाहरण के तौर पे आपको एनओसी चार्ज करना है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस करना है, एनओसी मींस नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अलग है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस अलग है, बट द एब्रिविएशन इज लिटरली द सेम। तो 10% का सरकार का प्रिस्क्रिप्शन है, आपने चार्ज कर लिया फ्लैट या ज्यादा चार्ज कर लिया, जो कि आजकल की सोसाइटी में फितरत में चल रहा है। तो द ऑडिटर हैज टू चेक आउट दैट, maybe randomly, but it has to check out that and report it. Various other fees and a host of other things also has to be checked out. Fees किसको किसको की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वगैरह को. It has to check out कि defaulters पे action लिया है या नहीं लिया हुआ है. It has to check compliances, that is the return filing of income tax returns, TDS deductions, जीएसटी नॉन रजिस्ट्रेशन, आपको पता ही होगा जीएसटी नॉन रजिस्ट्रेशन का 25,000 रुपये पेनल्टी है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसटी डिडक्शंस फ्रॉम मेंबर्स। जीएसटी के बारे में बता दूं आपको कि आपका टर्नओवर 20 लाख का हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, whereas also भी आई थिंक इज हर CHS whether covered under GST or not, GST में रजिस्टर करिए आप, भले नील रिटर्न फाइल करो पर रजिस्टर करके रखो, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बड़े सिविल रिपेयर्स फंड में या बाकी चीजों में काम आती है। देन जीएसटी डिडक्शंस फ्रॉम मेंबर्स, फ्रॉम वेंडर्स। ऑडिटर आल्सो हैज टू चेक वेदर प्रोफेशन टैक्स, 750 रुपया प्रोफेशन टैक्स से CHS को लागू पड़ता है, वो डिडक्ट किया है या नहीं किया हुआ है, पेमेंट किया है कि नहीं किया हुआ। नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, दैट इज NA टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, BMC का जो प्रॉपर्टी टैक्स है, और अगर आप कॉरपोरेशन एरिया के बाहर में, काउंसिल एरिया के बाहर है तो तलाटी की तरफ से जो टैक्स आता है, दैट इज विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, उसके टैक्स। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो फेलियर्स होते हैं मैनेजिंग कमेटी के, ये सारे ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में रिकॉर्ड करना है। टिपिकली मोस्ट ऑडिटर्स बोलते हैं कि हमने चेक कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया, हमारे जो सेटिस्फेक्शन है हो गया, but these are the things which a prudent auditor should record. Auditor should also record and report managing committee personal liabilities for late payment, penalties, interest levied by statutory authorities. जैसे उदाहरण के तौर पे आपने TDS लेट फाइल किया तो 200 रुपया पर डे का चक्कर चलता है उसके अंदर। GST का भी सेम चीज है,
एनी टैक्स का भी सेम चीज है, प्रोफेशन टैक्स बोले तो पेनल्टी नहीं लगा रहे. Note that auditor is not a deemed public servant. He is not a deemed public servant. वो deemed public servant कौन कौन है? That is covered under section 161 of the MCS Act, read with section 21 of the Indian Penal Code. So auditor ये सारी reporting नहीं करता है, and it is found that auditor is in connivance with the managing committee for misreporting or false reporting, then he also becomes liable for criminal prosecution. Auditor is also liable for not recording non-compliances or filing returns of income tax and GST, etc. Auditor is liable under section 81. Auditor is liable to recommend to DR, Deputy Registrar, to file prosecution against MC for illegalities, losses, extortions, collecting legally non-tenable contributions from members. He has to prepare a report recommending that ये सारी offenses हुए हैं. I am submitting my report, and you may take your discretion or use your discretion to file the prosecution. Why is this to be done? Because this simple report absolves of, condones of any prosecution that may be filed against the auditor. Auditor is not immune, please remember that. Auditor also has to report any illegal and false withdrawal of sinking fund, repair fund, deposits. कई deposits हैं सोसाइटी में, कई सोसाइटीज में पार्किंग डिपॉजिट्स लिया जाता है, टेनेंट डिपॉजिट्स लिया जाता है, रिपेयर फंड आप रिपेयर करा रहे हो, रिनोवेशन डिपॉजिट्स लिया जा रहा है, और एनी अदर अक्यूमुलेटेड फंड्स ऑफ CHS फ्रॉम द बैंक. कई सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी क्या करती है, ठीक है हमने अपने मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में सैंक्शन कर लिया, ये 50 रुपए का सिंकिंग फंड हम तोड़ के अपने काम में यूज करते हैं. बट दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल. यू नीड टू टेक प्रॉपर परमिशन टू डाइल्यूट, dissolve, remove, or encash the sinking fund, and this particular thing has to be recorded in a general body resolution, for which you may call an SGM, that is special general body meeting, or an annual general body meeting. And the extract of this resolution, जैसे हम कंपनीज एक्ट में कैसे करते हैं, BOD का एक एक्सट्रैक्ट लगाते हैं और उसको अलग अलग कामों में यूज करते हैं, सेम ही एक्सट्रैक्ट ऑफ रेजोल्यूशन आपको बैंक को देना है कि ये सैंक्शन है, इतना सिंकिंग फंड 50 रुपए का सैंक्शन मिला है, इसको इनकैश करना है. ऑडिटर ऑल्सो शुड चेक ओ फॉर्म दिया बनाया जाता है अंडर सेक्शन 82 ऑफ द MCS एक्ट. टिपिकली इट इज कॉल्ड एज previous financial years audit rectification report, O form. So O form is a statement where symbolic or actual defects noted by auditor for the previous audit, ये आपको फाइल करना है within 3 months of the audit report with the DR's office. This is to be filed by the MC, but the auditor is liable to check कि पिछले टाइम का ये प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं किया हुआ. आपको ये बता दूं कि non-compliance of this O form under section 82 also invites disqualification, debarment of managing committee from the MC seats for 5 years. Another mandatory document in the AGM notice agenda set is the managing committee working report. It is to be signed by the chairman. What is this report? It is a concise essence summary of the managing committee activities of the minutes, MC minutes of the entire year. मैंने क्या क्या किया उस साल में, उसका कंसाइज रिपोर्ट ये मैनेजिंग कमिटी वर्किंग रिपोर्ट में डालना है. ये ऑडिटर को चेक करना है पिछले साल का. इस मैनेजिंग कमिटी रिपोर्ट में आप क्या क्या करोगे? Proposed activities by MC in this managing committee report also will include proposed activities by managing committee for current financial year. It should also contain key details of live-in licensed tenants. कि इतने live-in licensed tenants है, 10 tenants है, और इतना NOC charges, non occupancy charges लिया जा रहा है, इतना shifting charges लिया, इतना deposit लिया, वगैरह वगैरह. Money is collected as membership entrance fees
जब आप मेंबरशिप ट्रांसफर करते हो सोसाइटी में तो आप 3 चीज लेते हो टिपिकली लीगली, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस। मेंबरशिप एंट्रेंस फीस इज 100 रुपीज पर ओनर। अगर एक एग्रीमेंट में 3 नाम है तो आपको 300 रुपए लेना है। तो ये मेंबरशिप एंट्रेंस फीस हुआ एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर ओनर। मेंबरशिप ट्रांसफर फीस दैट इज 500 रुपीज पर ट्रांसफर एंड देन द शेयर ट्रांसफर प्रीमियम। मुंबई शहर में 25,000 रुपया membership transfer fees है। Auditor is also liable to check any voluntary donations taken from this incoming or outgoing members, which is prohibited, but he has to note it and report it to the DR. Managing committee working report will also contain capex expenditure, capital expenditures, previous spending activities and futuristic proposed activities by MC. Any type of legal litigations pending or forthcoming, deemed conveyance status if applicable, and any redevelopment discussions as may be applicable. आपके जो सिंकिंग फंड है, रिपेयर फंड है, ये आपको बैंक में लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीरियड में जमा करना है एंड इट हैज टू बी स्पेसिफिकली ईयर मार्क्ड। 100 रुपया ये सिंकिंग फंड में जमा किया हुआ है तो आपके इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में आपको मार्क करना है कि 100 रुपया सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, वही फिगर आपका बैलेंस शीट में दर्शाया जाएगा। सेम विथ रिपेयर फंड, सेम विथ रिजर्व फंड, सेम विथ कॉर्पस फंड, सेम विथ डोनेशंस। यू आर एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट डोनेशंस फ्रॉम द सोसाइटी मेंबर्स and from any third party outside. You can accept donations from an NGO also. You can accept donations from a corporate body, anybody. These investments can be invested only and only in a cooperative bank and nationalized banks, but definitely not in private banks. That does not permit investment in private banks. Investments, this sinking fund, reserve fund, repair fund, etc., also can be invested in RBI permitted mutual funds, equity markets, bonds, debentures, etc. This particular criteria is now permitted under the amended MCAs Act, which was brought in July 2019. ये मैनेजिंग कमिटी वर्किंग रिपोर्ट में आपको ये भी बताना है कि हमने कितने नॉमिनेशन फॉर्म्स है, मेंबरशिप नॉमिनेशन बढ़ते हैं अपने फ्लैट का, तो यू हैव टू से इन द मैनेजिंग कमिटी रिपोर्ट कि वी एक्सेप्टेड सो मेनी नॉमिनेशन फॉर्म्स, वी अप्रूव्ड सो मेनी नॉमिनेशन फॉर्म्स ऑफ सो एंड सो लिस्ट देना है, और वी रिजेक्टेड सो मेनी नॉमिनेशन फॉर्म्स अगेंस्ट द लिस्ट देना है, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द नॉमिनेशन रजिस्टर। नॉमिनेशन फॉर्म अलग है, सोसाइटी के अंदर स्टैट्यूटरी रजिस्टर में नॉमिनेशन रजिस्टर अलग है। नॉमिनेशन फॉर्म्स 3 होते हैं। ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म्स एमसी में रिकॉर्ड करके नॉमिनेशन रजिस्टर का सीरियल नंबर डाल के मेंबर को वापस दिया जाता है। जो सेकंड फॉर्म है वो सेम रिप्लिकेट होगा, वो सोसाइटी के नॉमिनेशन रजिस्टर के साथ में नॉमिनेशन फॉर्म एक फाइल अलग से बनानी होती है, उसके अंदर वो स्टोर होता है, ताकि जब कभी ओनर का नॉमिनी क्लेम करता है मेंबरशिप के लिए तो वो फॉर्म को काउंटर चेक करना है आपको, और आपके नॉमिनेशन रजिस्टर में भी वो काउंटर चेक करना है। मैनेजिंग कमिटी वर्किंग रिपोर्ट ऑल्सो शुड शो वेरी briefly key information, main information, key point information on various government circulars, notifications, GRs, and any law amendments that is possible. Simple, short, very brief words. No need of writing any essays. Typically, अगर आप एक सोसाइटी का MC वर्किंग रिपोर्ट देखोगे तो it is average of 3 to 4 pages. Sometimes it is bigger also, depending on the size and budget of the society. Now comes the one of the most important part of AGM is, that is under section 75, is the budget projection sheet for the forthcoming year.
तो बजट प्रोजेक्शन शीट में क्या है, आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहले 3 कॉलम्स में क्या होंगे, एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रीवियस 3 years बैलेंस शीट इन IN, बैलेंस शीट दैट इज बैलेंस शीट BS and IE that is income and expenditure, and mandatorily the fourth coming years tentative projected expenditures। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले साल का आपका सिक्योरिटी एजेंसी का एक्सपेंडिचर 100 रुपया हुआ, बैलेंस शीट में 100 रुपया दर्शाया हुआ पहले साल में, दूसरे साल में 110 रुपया दर्शाया हुआ है, तीसरे साल में 115 रुपया दर्शाया हुआ है। तो ये पिछले 3 साल के बैलेंस शीट हो गए, जहां पिछले बैलेंस शीट को एक्चुअली पिकअप करना है और वही फिगर एक्चुअली रिप्रोड्यूस करना है आपको ये 3 कॉलम में। अब चौथे कॉलम में आपको आते साल का बजट प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करना है। तो आप ये सोचिए कि पहले साल 100 था, दूसरे साल 115 था, तीसरे साल 120 था, तो आते वाले साल में कितना होगा। तो टेंटेटिवली यू शुड प्रोजेक्ट 10% odd for the fourth coming year. That is the budget projection. It is only a projected and tentative figure. It is not an actual figure. Why is this required? I'll explain after some time. Budget projection sheet may also you have to include any capital expenditure that you may be thinking of, and shall also show various contributions or receipts from members. अब capital expenditure क्या है? MC सोचती है कि ऑफिस में हम कलर करते हैं, AC लगाते हैं, नया कंप्यूटर लेते हैं, बूम बैरियर लगाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्पेसिफिक परमिशन from the GB for this particular capex, if it is limited purposes, then you can show it in your budget projection. जब आप budget projection produce करते हो, तो the MC has to discuss, the GB has to discuss and approve the same, which in turn legally implies that you have accepted the previous 3 years balance sheet। वो तो accept हो ही चुका है। फोर्थ कमिंग ईयर का प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस भी सैंक्शन करवा दिया आपने, और ये जो छोटे मोटे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है। Now supposing now you want to buy an AC for 2 lakh rupees, you cannot go to a GB for 2 lakh rupees. It becomes rather difficult. You may or you may not get, but this is one way of taking approval from the GB via only and only in an AGM for various small time capital expenditures. वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम मेंबर्स भी शो करना बजट प्रोजेक्शन में। एक्चुअल कैसे, जैसे सर्विसिंग चार्जेस इतना का 100 रुपया पूरा साल का है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस इतना आया, पेनल्टी का इतना आया, और कोई अगर चार्जेस आप ले रहे हैं तो वो आया। दिस आर ऑल रिसिप्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स you know these are all GST applicable now this. One another important criteria as per section 75 of the MCS Act for conducting AGM is including a list of new membership transfer list. पूरे पिछले साल में अपने 50 मेंबरशिप ट्रांसफर्स किए, वो ट्रांसफर हो सकते हैं सेल डीड के माध्यम से भी हो सकते हैं, गिफ्ट है, रिलीज डीड है, फैमिली सेटलमेंट है, प्रोबेट है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट डिग्रीज है, अदर्स है, कई माध्यम से आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं। तो आपको उनका लिस्ट बनाना है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ओल्ड मेंबर, नेम ऑफ न्यू मेंबर, फ्लैट नंबर, कितने पैसे मिले उसके, मेंबरशिप एंट्रेंस, ट्रांसफर और शेयर ट्रांसफर प्रीमियम, कौन से डेट पे MC मीटिंग में अप्रूव किया, और एनी रीजन फॉर रिजेक्शन आल्सो। मेंबरशिप ट्रांसफर लिस्ट में AGM के समय सिर्फ मेंबर को नमस्ते बोल के इनवाइट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। GB के पास कोई अधिकार नहीं है ये मेंबरशिप लिस्ट को नकारा करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। दे डू नॉट हैव एनी राइट, बिकॉज द MC बीइंग the sole governing and administrative authority of the society is the only authority vested for scrutinizing the membership transfer files, accepting it or rejecting it. The GB does not have that. Obviously, you cannot accept a 200 member society to scrutinize a sale deed. सारे दोस्तों को बोलेंगे लाओ पहले हमें फाइल को हम स्क्रूटिनी करेंगे फिर हम अप्रूवल करेंगे, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 73 में अथॉरिटी दिया हुआ है मैनेजिंग कमेटी को।
मैनेजिंग कमिटी कौन है? आपका ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे देश के मंत्री और अलग अलग पोस्ट होते हैं। यू कैन नॉट गो टू द पार्लियामेंट से मैं ये कानून बनाना चाहता हूँ। आपने अपने प्रतिनिधि बरकरार किए हुए, निर्धारित किए हुए, अपॉइंट किए हुए। नेक्स्ट इन द एजीएम एजेंडा शुड बी रिकवरी प्रोसीडिंग्स। तो उस रिकवरी प्रोसीडिंग में कि भाई 4 लोगों के अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग करना है, डेलिब्रेट करिए कि करना है या नहीं करना है, या एक्स्ट्रा टाइम देना है वगैरह वगैरह, या कोई छोटी मोटी सब कमेटी बना देना है ताकि वो प्यार से एमिकेबली सेटल करने की कोशिश करना है उस मेंबर से। तो वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर से शायद उसके सितारे अच्छे नहीं है, तो जनरल बॉडी में से 3 मेंबर की कमेटी बनाइए, भेजिए बिफोर यू एक्चुअली फाइल फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएगी। और अगर ये बोलते हैं कि नहीं करना है, जनरल बॉडी बोलती है नहीं करना है सारा, रेजोल्यूशन पास करो कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर चालू करो। लीगल एक्सपेंडिचर है वो भी पास करना, बिकॉज दिस पर्टिकुलर जीबी रेजोल्यूशन and legal appointment of relevant advocate and sanctioning of relevant legal expenditure will be required during proceedings before the deputy registrar or before the cooperative court. You have got 2 methods of recovery proceedings that can be done. One is under section 150 154B29, अभी जो नया अमेंडमेंट आया उसमें पहले वाले सेक्शन 101 को 154B29 कर दिया हुआ। 154B29 is applicable only and only for housing societies. For other societies जैसे प्रीमिसेस सोसाइटीज है, जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, गाला सोसाइटीज है, ऑफिस सोसाइटीज है वगैरह वगैरह, उनके लिए आज के दिन में भी 101 ही लागू है, एप्लीकेबल है। सेक्शन 73(1) भी ये बोलता है कि मैनेजिंग कमिटी इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस एंड ओमिशंस। अब ये क्या चीज हुई? अगर मैनेजिंग कमिटी ने रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं फाइल किया, इट डज नॉट इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ऑन द डिफॉल्टर्स, then MC is personally liable for non-recoverable outstanding dues of defaulter members. Why? Because this thing has caused loss to CHS. I will repeat the word non-recoverable OS, outstanding dues. किसी कारणवश आप DR के पास में गए, अपील में गए, रिवीजन में गए, कोऑपरेटिव कोर्ट में गए, अपीलेट कोर्ट में गए और फिर भी नहीं रिकवर हो पाया। जैसे कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओगे तो वो लिमिटेशन लागू पड़ जाता है और उतने पीरियड का हम नहीं करते। कई मैनेजिंग कमेटी की फितरत होती है बोलने के लिए कि भाई हमें तो 21% इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है, जब भी वो फ्लैट बेचेगा या कुछ जरूरत पड़ेगी उसको तो वो आएगा हमारे पास में, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। एंड देन वी विल सी, देन वी लुक एट इट, बट दिस इज अ फॉल्स नोशन। लिमिटेशन इज डेफिनेटली एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटीज. The defaulter is classified as a defaulter if he has not paid the society dues for 3 months. 3 months का नहीं दिया, defaulter classify हो गया वो। लेकिन classify करने के लिए due procedures of law follow करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे उसे succeedingly 20-20 दिन के अंतराल में 3 रिकवरी नोटिसेस देनी है। रिकवरी नोटिसेस के 3 देने के बाद 1 महीने के बाद में यहाँ पे अभी वो लिमिटेशन पीरियड आ गया। बाद में रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल करनी है 101 में, 154B29 में, और under section 91 in the cooperative court. Recovery proceeding can be filed under section 91 in the cooperative court if and provided and subject to that the recovery amount is disputed. The key word is dispute. अगर disputed amount है तो cooperative court में जाएगा, simple money claim है तो DR के पास में जाएगा। Bylaw amendments procedures is prescribed under section 13 MCAs Act and under rule read with rule 12 under MCAs rules. Auditor का जो अपॉइंटमेंट है वो मैनेजिंग कमिटी नहीं कर सकता. This is also a component of section 75, mandatory component. So auditor appointment can be done only and only in a GB meeting.
Same auditor cannot be appointed by GB, चाह कर भी cannot be appointed by GB for more than 3 years. तो जैसे अनिल शर्मा ने FY 17-18 का ऑडिट कर दिया, 18-19 का कर दिया, 19-20 का कर दिया, अब वो 20-21 का नहीं कर पाएगा. तो ये उसका अपॉइंटमेंट 4th ईयर के लिए भी करना, वो ऑडिट रिपोर्ट नलीफाई हो जाता है. देन यू हैव टू डू ऑडिटर वाया गवर्नमेंट ऑडिटर अंडर सेक्शन 81. यहाँ पे सेक्शन 75 रेड विथ 81 करने वाले थे, रेड विथ 82, अब वो जाएगा अंडर 81 ब्रैकेट 6 के अंडर में. तो ऑडिटर 3 साल के बाद में सेम ऑडिटर को नहीं करना है. ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने का लेटर देना है, उसे कंसेंट लेटर लेना है, और वो कंसेंट लेटर डीआर के ऑफिस में फाइल करना है. मतलब ऑडिटर को लिखना है कि वी आर हियरबाय अपॉइंटिंग यू एज एन ऑडिटर बाय वर्च्यू ऑफ द जीबी रेजोल्यूशन डेटेड सो एंड सो, कॉपी एनेक्स्ड हियर विद. ऑडिटर का आता है, आई एक्सेप्ट ऑडिट योर ऑडिटर अपॉइंटमेंट फॉर FI सो एंड सो करके. दिस इज मैंडेटरी. Failure to appoint auditor in a GB means DR will appoint sumo to appoint a panel auditor of his choice from his list. There is a panel auditors list available with the Divisional Joint Registrar's Office. I'm talking specific of Mumbai. I mentioned to earlier about the budget projection sheet. I am relating that to this now. Abhi society is supposed to be functioning on a no loss, no profit, no loss basis. This is one of the mandatory things. This means society is supposed to be functioning on a no profit, no loss basis. This means collecting and holding money, members' money is illegal. Increase in monthly service and maintenance charges will strictly depend on the budget projection sheet. अभी वो आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि चौथे कॉलम में आते साल का बजट प्रोजेक्शन शीट देखना है. उस बजट प्रोजेक्शन शीट में यू हैव टू सी वेदर देयर इज एनी डेफिशिट. अब डेफिशिट कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेंडिचर माइनस द कॉन्ट्रीब्यूशंस. डेफिशिट आया तो आपके सोसाइटी का सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस आप इंक्रीज करिए, और अगर प्रॉफिट आया देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंक्रीज योर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस. Another thing is to increase charges for civil repair funds or any specific repair funds for which there is a under specific procedure you need to follow. All this means that increase is possible only in an AGM. Why in an AGM and not in an SGM? Because increase is possible based on the budget projection sheet. Budget projection sheet is possible only and only in an AGM and not in an SGM. Why? Because it is covered under section 75. So AGM, section 75, budget projection sheet, and increase in bills is interlinked with each other. Provident fund, ESIC, gratuity, labor laws are not applicable to housing societies. AGM, via using a general body majority resolution, you can appoint a 3-member or 5-member or a 7-member subcommittee from amongst the volunteering general body members. ये सब कमिटी किस चीज के लिए हो सकती है? मानो आपके पास 4 टावर है, उसके अंदर 16 लिफ्ट लगी हुई है. मैनेजिंग कमिटी ये देखभाल करने में कई बार असक्षम रहती है, बिजी रहती है, नहीं कर पाती वगैरह. तो इट इज a better thing for transparency also and for easier management to appoint a subcommittee to look after only lifts, to look after only garden, to look after only security and so and so. आपके ये जो आइटम्स है वो कहाँ मिल जाएंगे आपको? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट में मिल जाएंगे कि भाई अकाउंट्स के लिए भी आप सब कमेटी बना सकते हो. जैसे हम टिपिकली कई बार रेफर करते हैं internal auditor. You can have an internal auditor. Of course, that has to be also appointed only in an AGM, not in an SGM.
So subcommittee you can appoint in an AGM, 3-member वगैरह from amongst the general body. Their authority will subsist or be applicable till the next AGM for purposes of to help coordinate with MC for basic functions. This indirectly also helps in training and educating other interested general body members, and to avoid usual allegations on managing committee for mismanagement or misappropriation of funds. आप जानते हैं ये टिपिकली फैशन है, आदत है, हर सोसाइटी में ऐसा होता रहता है। बीएड अगर कोई फ्लैट कंपनी के नाम पे है तो उसका प्रतिनिधि कैसे एक्सेप्ट अपीयर कर सकता है सोसाइटी में? देयर बीओडी बोर्ड ऑफ उनका बोर्ड का रेजोल्यूशन में अपॉइंट एन अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. दिस अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव may be a part of the company or may not be a functionary of the company. So authorized representative of any company, that means any legal entity, that means any non-natural person can be appointed. I'll just repeat, it's getting confusing. Legal entity means a private limited company, that is a juristic body, LLP, a firm, HUF, trust, etc. Their representative can attend the AGM via their resolution appointing a authorized representative, who can be anybody. He can attend the AGM also and SGM also. Bylaw defined, bylaw number 3XXV defines family members. Family member में आ गया पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, एंसो बहन भाई वगैरह वगैरह. So bylaw defined family members of the bona fide member may attend AGM, SGM, may attend AGM, SGM only as non-participating gallery spectators without interfering or having any say in the matter. For your info, this is allowed in the parliament also. अगर आप पार्लियामेंट चले जाओ और आपको प्रोसीडिंग देखना है तो गैलरी है, आप बैठ के देख सकते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर. इसी तरह bylaw defined family members may be allowed to attend AGM, SGM. Discretion is vested with who? With the presiding officer, with the chairman of the meeting, because he is the sole authority to conduct the meeting. But they will not be able to talk in between or propose or second or interfere. Vis-a-vis president of the meeting, presiding officer or chairman of meeting has sole authority to remove any attendee member from AGM or SGM. किस कारण से रिमूव करेंगे वो? For disturbing or creating nuisance during AGM proceedings. आपके नॉलेज के लिए ये बता दूं कि ये जो AGM और SGM का proceedings है, these are in fact legal proceedings, not a judicial proceedings, but a legal proceeding, because this is implementable, executable by the governing body against the members, and these are respected by the authority and by the cooperative court if it is legitimate. So if the chairman removes any attendee GB member from AGM for disturbing or creating nuisance during AGM proceedings, then the reasons for the same must be recorded in the AGM minutes. Similarly, president or the chairman can adjourn AGM proceedings for 10 to 30 minutes to cool down abusing, fighting, violence or nuisance measures being experienced. ये सिर्फ अधिकार प्रेसिडेंट या चेयरमैन को है. इसके भी रीजंस उसे एजीएम के मिनट्स में रिकॉर्ड करने हैं कि भाई अनिल शर्मा ने गाली गलौज किया, लड़ाई झगड़ा किया, इसके लिए मैं एजीएम प्रोसीडिंग को 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ. टिपिकली दिस वर्क्स, आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस. मीटिंग को शोर शराबा हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, चेयरमैन बोलता है सडनली ये नॉनसेंस हो रहा है, मैं मीटिंग को 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ.
एडजर्न करने के बाद में वो उठ के वहां से हट जाता है। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तब तक मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के उठने के बाद में मीटिंग को फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। इवन इफ ही वांट्स टू गो टू द वॉशरूम, then too he has to take the permission of the GB, adjourn it for so many minutes, come back and then proceed. Reasons to be recorded in the AGM minutes. At majority general body members' requests, AGM minute writing authority can be delegated to any GB member. जैसे जनरल बॉडी मेंबर बोलते हो कि मिनट्स कौन लिख रहा है, तो सेक्रेटरी बोलता है कि हमारा ट्रेजरर लिख रहा है, ये मैनेजिंग कमेटी मेंबर लिख रहा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि सेक्रेटरी तो बिजी है खड़े होके बात करने में, समझाने में, बोलने में, वगैरह वगैरह। तो जनरल बॉडी के मेजॉरिटी डिसीजन से एजीएम का मिनट राइटिंग अथॉरिटी विद द परमिशन ऑफ द चेयर कैन बी गिवन टू एनी जनरल बॉडी मेंबर who will now come and sit near the chairman, or it can be given to the manager of the society also. Manager is entitled to attend AGM with relevant records. जैसे अभी अकाउंट संबंधित कुछ बातचीत करनी है, ये डिस्कस करना है, या मेजर रिपेयर फंड संबंधित कुछ डिस्कस करना है, या बजट प्रोजेक्शन संबंधित कुछ डिस्कस करना है, या मेजर जो आपके बिल्डिंग के रिपेयर्स होने उसका बजट, उसका जो प्रोजेक्शन शीट्स है या आर्किटेक्ट का रिपोर्ट है, वो सारे लेके आने का काम मैनेजर को होता है। छोटी सोसाइटी सेक्रेटरी खुद कर लेता है, बड़ी सोसाइटी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर भी कर सकता है। तो दे आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एजीएम विथ रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड कैन बी इंटरेस्टेड, उसे अथॉरिटी दिया जा सकता है मिनट्स लिखने के लिए। विथ मेजॉरिटी डिसीजन recorded in a resolution, GB में जनरल बॉडी में रिजेक्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट citing various types of illegalities. खाली ऐसे ही नहीं बोल देना है कि मैं रिजेक्ट करता हूँ। There has to be some speaking justification. जैसे हम कोर्ट में बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स, वैसे स्पीकिंग जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये चीज गलत हुई है, ये मुझे पता है गलत हुई है, ये ऑडिटर 14 साल अभी ऑडिट कर रहा है, वगैरह वगैरह, तो मैं ऑडिटेड बैलेंस शीट को रिजेक्ट करता हूँ। अगर ऐसा होता है, if it so happens that then CHS is bound to have the accounts, society is bound to have the accounts re-audited under section 81(6) from the cooperative department auditors at expense of CHS. Now, a panel auditor or a chartered accountant will not be able to audit it. It has definitely to go to a cooperative department auditor, government auditor that is, और इसका खर्चा बेयर करेगी स्वाधीन सोसाइटी। अगर जनरल बॉडी ने रिजेक्ट किया हुआ है तो सोसाइटी बेयर करेगी, और अगर कोई सिंगल मेंबर बोलता है कि नहीं मैं री ऑडिट कराऊंगा तो अपना वो खुद ऑडिट कराएगा। उसका एक्सपेंडिचर री ऑडिट का अंडर 81(6) इज 100 रुपीज पर मेंबर पर ईयर बेसिस प्लस एनी इंसिडेंटल दैट मे बी होगा। एजीएम कंडक्ट करने के लिए छोटे मोटे और पैरामीटर्स हैं आपके। अगर मानो एजीएम आपने समय निर्धारित किया है 10:30 बजे सवेरे, दिन, समय और जगह तय करने का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को है। तो उस जगह पे अगर 10:30 बजे की मीटिंग किया हुआ है, बायलॉज के हिसाब से कम 20 मेंबर होना जरूरी है वहां पे एट द अपॉइंटेड टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एट द अपॉइंटेड टाइम। एट द अपॉइंटेड टाइम अगर 20 मेंबर नहीं है तो चेयरमैन का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एडजर्न द मीटिंग फॉर 30 मिनट्स। मिनट करना है उसे, ड्यूली रिकॉर्ड करना है कि मैं इस कारण से मीटिंग को एडजर्न कर रहा हूँ, एंड देन कंडक्ट द एजीएम मीटिंग, reconvene the AGM meeting with whatever number of members are present and carry on the business of the society without any requirement of any general body quorum. अगर छोटी सोसाइटी है तो बात अलग है, पर अगर सोसाइटी का बजट है then AGM should be video recorded
as per the Cooperative Commissioner Circular dated 15/3/2010. क्यों? Because it helps in futuristic convenience of writing minutes. वो जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया उसी को देख के आप प्रॉपरली मिनट्स लिख सकते हो. And it helps in maintaining transparency. मेंबर वो कह सकता है आपके वीडियो, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी दो. A prudent MC should give that copy. AGM में एक और भी क्राइटेरिया आप एक्सरसाइज कर सकते हो. जनरल बॉडी हैज चॉइस ऑप्शन टू रिमूव द एब्सेंट और प्रेजेंट chairman and appoint a general body, one of the general body members as president for the meeting. ये अधिकार है. तो जनरल बॉडी बोलती है कि भाई चेयरमैन को हटाओ वहां से, हमें नहीं चाहिए वो गलत आदमी, उसका चेहरा पसंद नहीं है. हमारे पास ये अनिल शर्मा है, इनको तजुर्बा है, इनको सारा नॉलेज है, इनको हम अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. दिस इज परफेक्टली पॉसिबल वाया ए प्रॉपर जनरल बॉडी मेजॉरिटी डिसीजन एंड ए ड्यूली मिनिटेड. चेयरमैन या प्रेसिडेंट एक्चुअली जो मीटिंग कंडक्ट करता है एजीएम का, he is not supposed to be called the chairman of the meeting. He is supposed to be called the president of the meeting or presiding officer of the meeting, who is supposed to be a neutral authority. So he has to see कि अगर वोटिंग के समय यहाँ पे भी 50 वोट पड़े, यहाँ पर भी 50 वोट पड़े, तो वो अपना डिस्क्रिशन, because he is a neutral authority, he can put a vote on this party's favor, on that party's favor. This is also legally perfectly allowed and applicable. Secretary should take up the first agenda in the notice. मेंबर को बोलना है कि डिस्कस कर लो 2-3 मिनट और उनका अप्रूवल और सैंक्शन लेना है. जैसे मैंने पहले बताया, एजेंडा को कितना समय लगना है, कितना डिस्कशन के लिए समय देना है, वोटिंग के लिए कितने समय देना है, ये सेक्रेटरी को प्रीएम्प्टिवली पहले से कैलकुलेट कर लेना है. नहीं तो आपका एजीएम 7-8 घंटे भी चल सकता है. डिस्कशन होती है, लोग आते हैं, अपना पुराना आउटबर्स्ट निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं, लोगों को ज्यादा बात करनी है, they want to put up their own personal views, own personal complaints. Everything is concentrated in an AGM. So secretary has to factor in all these things and calculate the time required for this AGM. Each agenda must have a negative or a positive resolution. Agenda may be passed or rejected. Even if it is passed, there should be a proposer. There should be a seconder proposed by Anil Sharma, seconded by Sunil Rao. And passed unanimously. अगर उस पॉजिटिव एजेंडा में कोई ऑब्जेक्टर है या कोई नहीं प्रपोज करना चाहता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है, देन इट शुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली. अगर एजेंडा को रिजेक्ट किया जा रहा है, then too you have to pass a negative resolution. Again there should be a proposer and a seconder, and then you have to record the reasons why this agenda is being rejected. Just simply बोल देने से कि एजेंडा आप रिजेक्ट कर रहे हैं is not the purpose of the मीटिंग. उस मीटिंग उस दिन खत्म हो जाती है, लेकिन उसके रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस आते दिनों में आपको दिखाई देते हैं. कई लोग बोलते हैं कि ये चीज क्यों हुआ या ये चीज क्यों नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम उस तैयारी में आना चाहिए. इफ एजेंडा इज नॉट प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड and passed by one of the attendee GB members, then the resolution shall be considered as null and void during times of dispute reaching courts. एक कोर्ट में मैटर गया कि 100 रुपया मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज किया हुआ है और जनरल वर्ड लिख दिया कि जनरल बॉडी ने पास कर दिया, नो प्रपोजर नो सेकेंडर. एक आदमी कोऑपरेटिव कोर्ट गया, चैलेंज किया कि ये तो एजेंडा में कोई प्रपोजर था ही नहीं, कोई सेकेंडर भी था ही नहीं. वो रेजोल्यूशन को
स्ट्राइक डाउन कर देगा कोर्ट. So proposer and seconder, whether it is a negative or positive resolution, is compulsory and it should be duly recorded. Resolution should be short, concise, and individual members' comments, opinions, arguments should not be recorded. To discuss and decide to increase society maintenance charges based on the deficit figure of the budget projection sheet. आपस में डिस्कस करने दो, जो भी कुछ करना है करने दो, लेकिन उनके ये कमेंट्स, ओपिनियंस, आर्गुमेंट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रेजोल्यूशन. द कंक्लूजन पार्ट इज जनरल रेजोल्यूशन क्या आएगा? डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड एंड द जनरल बॉडी approved increase of ₹100 in the monthly maintenance charges based on the budget projection deficit figures proposed by, seconded by, that's it, nothing else. इतिहास लिखने जाओगे तो इतिहास जब कोर्ट में चैलेंज होगा, अगर कोर्ट में चैलेंज होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी तकलीफें आती हैं. इट विल बी इंटरप्रेटेड in various other ways. This interpretation is going to be adverse to the society's interest and other members of the society. एक सेक्शन है सेक्शन 72, जिसके अंतर्गत में अब जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं. सेक्शन 72 ये बोलता है कि जनरल बॉडी का अधिकार विल बी फाइनल, पर वो सेक्शन और भी ऐसा भी बोलता है ड्यूरिंग द मीटिंग. तो ड्यूरिंग द मीटिंग जनरल बॉडी के अधिकार फाइनल है, उनका जो डिसीजन लिया हुआ है दैट इज फाइनल and it is applicable to all the other absentee general body members of the society. This adhikar can be challenged only under section 91 in the MCS code. Section 91 एक broad spectrum है जिसके अंदर आप recovery proceedings, disputes, फला ढिकाना बहुत सी चीजें challenge कर सकते हो. The key word is dispute under section 91. General body has got no authority. I'll repeat. General body has got no authority to dictate anything to the managing committee, even during AGM meetings, except on the AGM item. General body ये नहीं बोल सकती कि ये एजेंडा को amend करो. No sir, that is not allowed. ये आप चीज include करो, not allowed. तो जो एजेंडा का आइटम है सिर्फ और उस पर सिर्फ चर्चा करना है और सिर्फ और उसी पे जनरल बॉडी का डिसीजन फाइनल होगा, उसके अलावा कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होगा. डिफॉल्टर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डिफॉल्टर लिस्ट इफ एनी मस्ट बी डिस्कस्ड इन एन एजीएम वाई प्रायर नोटिस एजेंडा. जनरल बॉडी टू डिसाइड यस और नो एक्शन, दैट इज फाइल करना है या नहीं करना है. पास पास relevant legal expenditures. आपको ध्यान होना चाहिए कि legal expenditures has to be shared equally by all the other general body members. इस legal expenditure का खर्चा उस particular defaulter पे आप नहीं डाल पाओगे. If GB decides no recovery action on defaulters, then it is mandatorily to be recorded in this GB resolution for documentary evidences, since in the event of any futuristic failure to ultimately recover society dues, defaulter dues, the GB is liable in equal proportion for any such losses to the society, and the MC is absolved. MC बरी कर दिया जाता है. Auditor has to record such GB decision is in his observation report, क्योंकि यह रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, लीगल प्रोसीडिंग्स में काम आने वाला है आपको. This resolution is mandatory to be filed along with recovery application before DR. जब आप रिकवरी एप्लीकेशन फाइल करो डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट में, तो यही रेजोल्यूशन आपको काम आता है. अदरवाइज द रिकवरी एप्लीकेशन विल फेल, विल बी डिसमिस्ड, illegally null and void. There is an high court judgment for this thing. So a GB resolution to file recovery proceedings is mandatory.
जनरल बॉडी की जो मिनट्स है, दैट इज एजीएम के मिनट्स या एजीएम के मिनट्स, इसको मैनेजिंग कमिटी हैज टू प्रोवाइड ए रबर स्टैम्प सर्टिफाइड, ओरिजिनल रबर स्टैम्प सर्टिफाइड copy of the AGM minutes, SGM minutes to each member before the 91st day from the AGM meeting. Before the 91st day from the AGM meeting. This may include the video recording meeting, whether done online via Zoom या Google Meet या other in electronic media. एजीएम मीटिंग में मैनेजिंग कमेटी या जनरल बॉडी ये नहीं बोल पाएगी कि डिफॉल्टर्स मीटिंग नहीं अटेंड करेगा. डिफॉल्टर्स हैव ऑल द मेंबरशिप राइट्स, ईच एंड एवरी राइट ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग छोड़ के अगर डिफॉल्टर है तो भी उसको हर राइट है प्रपोज करने का, वोट करने का वगैरह वगैरह, पर कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा. So no rights of any type can be restricted or stopped. Members have option to file grievance petition before the deputy registrar, cooperative court, consumer court for non-GB minutes. No agenda resolution can be passed in any meeting which are against the legislative statutory laws, including levy of penalty for box grills, minor encroachments, tenant shifting charges, restricting lift timings. Against the laws means laws relating to MCS Act, Consumer Protection Act, BMC Act, MRTP, Fire Act, GST, Income Tax Act वगैरह वगैरह. जैसे कि भाई आपके जीबी बोलते हैं कि नहीं जीएसटी लागू नहीं करना है, उसमें हम नहीं भरेंगे. We will not be doing it. So pass a general body resolution because we are the supreme authority under section 72 for resolution को लागू करो. But resolutions against legislative statutory laws can be not be passed. They become liable for action, criminal actions and respective actions under the respective laws also. जैसे आपने बॉक्स ग्रिल लगाना अलाउ कर दिया, जो फायर एक्ट और बीएमसी और एमआरटीपी एक्ट में ऑफेंस है, आपने उसमें पेनल्टी भी लगा दिया, तो यू आर नॉट ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू लेवी पेनल्टीज फॉर violations of legislative acts. The legislative authorities are there to levy penalties. उनके bylaws में, उनके provisions में, but आपके provision में ये नहीं है. तो ये जो penalties लगनी भी है, जैसे आपने 2 फ्लैट्स को amalgamate कर दिया, बीच की डिवाइडिंग वॉल निकाल दिया और जनरल बॉडी में पास कर दिया, but that is violation of BMC Act, MRTP Act. तो आप ये अगर बोलोगे कि मैं जीबीयू में कुछ भी पास कर दूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. तो और सर्टेन एक्ट्स में है, जैसे कि कोई मेंबर को जानबूझ के परेशान करके किया जा रहा है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कवर हो जाता है. टिपिकली हम ऐसा सुनते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन नॉट अटेंड एन एजीएम. आपको पता होगा कि even under the corporate laws companies act, power of attorney holder can do many functions, not restricted. वो एग्रीमेंट भी साइन कर सकता है. डायरेक्टर अपना डिन नंबर डाल के पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं दूसरे को. सो क्वेश्चन arises is, can a POA holder, power of attorney holder, attend AGM? Answer is yes, it is possible, provided you put up an application before the cooperative deputy registrar, that is a DR of your ward, annexing the POA and requesting him to issue directions to the society to allow you to attend the AGM on behalf of the flat owner. फ्लैट ओनर में कोई भी हो सकता है. जैसे फादर मेंबर है और फादर ने अपने दोस्त को या दूर के रिश्तेदार को अटेंड करवाना है और कोई नहीं, बाकी सारे परिवार अब्रॉड में है या एक्सपायर हो गए, मर गए, शिफ्ट हो गए, दूसरे स्टेट में रह रहे वगैरह वगैरह, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कर सकता है.
फ्लैट ओनर के पूरा का पूरा परिवार यूएसए में, पर उसे अटेंड करना है क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ वहां पे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कन्वर्जन, तो पीओए होल्डर हैज टू गो टू डीआर रजिस्टर्स ऑफिस, पुट एन एप्लीकेशन, ये पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या काउंसिलेट अटेस्टेड है और मुझे अलाउ किया जाए, इश्यू अ डायरेक्शन टू द सोसाइटी। Now, based on these directions of the deputy registrar, the society will be compelled to allow the POA holder to attend the AGM. And on failure or refusal, the society MC would face penalty for disobedience of deputy registrar's order under section 154B 27, read with 154B 23. I will take another 5 minutes only. Any recorded minutes of AGM, SGM can be challenged only and only in the cooperative court under section 91. Minutes of AGM, SGM cannot be challenged before the DR. उसके बाद अधिकारी नहीं मिनट्स को एडजुडिकेट करने के लिए या नलिफाई करने के लिए। However, earlier general body minutes can be deleted and striked off or modified, that is amended, in any subsequent general body meetings by majority decision and resolutions duly recorded. GB resolutions can be revoked before 6 months. हमारा bylaws बोलता है कि जनरल बॉडी रेजोल्यूशंस कैन नॉट बी रिवोक्ड बिफोर 6 months. ये बायलॉज एक परदादा के जमाने से चला आ रहा है और उसको रिवोक करने का तरीका क्या है? GB resolutions can be revoked even before 6 months. How? Deletions and edit modifications can also be allowed only after 6 months, not before that. This is prescribed under the bylaws, but not in the act and rules. 6 महीने के पहले नहीं करोगे, ये एक्ट और रूल्स में नहीं लिखा हुआ है, बट बायलॉज में लिखा हुआ है। एक्ट ऑलवेज सुपरसीड्स द बायलॉज। एक्ट सेक्शन 72 read with section 76 of the MCS Act. Any GB resolution can be revoked, modified, quashed via proper prior notice agenda and majority GB resolution even before 6 months. The criteria is using 76 and authority of section 72 to revoke this particular general body resolution. कई बार क्या होता है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी बहुत कम कोरम में मन मर्जी रेजोल्यूशंस पास कर देते हैं या सुनते नहीं है लोगों का, या रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मिनट्स लिखने के टाइम पे वो रेजोल्यूशन नेगेटिव या पॉजिटिव पास कर देते हैं। Thank you for listening to my lecture. I know it was prolonged and lengthy, but I hope so it was interesting to you. I am concluding my lecture. Thank you, Mr. Kotari and others. I'm ready for any questions that our participants may have, sir. So there is a question by C. Radhesham followed. Whether sir, can you give me half minute, please? Yes, sure. I'll just excuse myself for only for half minute, sir. Sure. With no loss, no profit, no loss, etc. criteria. Labor laws not applicable to cooperative housing societies. The word clearly is written housing societies. Does not mean premises society, because it is not a housing society, or any other industrial society or agricultural society or milk societies or credit societies, etc. Okay. So MC is refusing to give copy of recording of meetings on even application before the MC. What are the rights of the members?
Okay, MC, JB may make an application under section 154B art, read with one section 154B 27 to the deputy registrar, stating the fact. Uske pehle make a proper application to the GB, to the MC. Please provide me so and so copies. I undertake to pay the relevant charges for the same within 15 days or whatever time limit. If the MC fails, make an application to the DR office. The DR office will issue instructions prudently if he wants to. Duty wise, he is bound to. And if the MC still fails, then the MC can be disqualified under 154B theories. Okay. I'll just inform you that disobedience of deputy registrar's order is covered under 153, 154B 23. 154B bracket 23. Okay. So sinking fund and other reserves can be distributed to members before redevelopment of society? Yes, that can be done. That figure has to match your sinking fund and reserve fund register. It is not to be distributed to the member. It is distributed to the flat. Member तो आना जाना चलता रहता है. 4 member के आगे पीछे निकल गए आप लोग. तो flat के against में उसे pass on किया जा सकता है. Provided a proper GB resolution is recorded in the same for the same. There is no requirement of DR's permission or auditor's permission or any other authority's permission for these purposes. Okay. So the aggregated accumulated fund, consolidated fund available on the sinking fund register matching with your balance sheet amount can be calculated and distributed. Okay. So whether amendment can be made in bylaws to charge maintenance on per square feet basis instead of per flat? Yes, it is possible. The reason is the society is now classified as an autonomous functioning body. If you remember 97th constitutional amendment in 2011, and now section 220, if you see, it is given autonomous functioning body. So the component of charging aspect is not reflected in the act and rules, but it is reflected in the bylaws. And anything that is a component of the bylaws can be amended by using section 13 read with rule 12 under parameters of section 72. This may be disputed by the deputy registrar. कि नहीं हमारा तो model bylaws यही कहता है. There is a high court judgment also. But technically this can be done and you are entitled to do that. We typically do it for condominiums or for RWAs, that is the Resident Welfare Association type AOPs. So this is possible in a under MCA's Act also. But if deputy registrar is only objecting, then would I actually? You can always file an appeal, let the matter go to the court. But if I am granted autonomous functioning body, I am not violating the law because there is no mention of the same in the Act and the rules. So if I am not violating the law, and if I have been vested with authority to modify the bylaws, and if service charges is a component of the bylaws, then why and who are you to object it? It is up to the general body to decide on the same. So what is the status of PMC or? Before that, yes, sir. Sorry. Service charges is the only one which is taken on per unit basis. Per unit basis, correct. Rest everything, sinking fund, repair fund, insurance, property tax, property tax or statutory tax, it is all taken on per square feet basis. Even the bylaw says कि जो major repairing fund है वो per square feet wise ही लेना, per unit wise नहीं लेना है. So this is the justification that can be used to increase or change the parameters of fixed repairing charges to fluctuating repairing charges. That is per square feet basis. Yes, sir. Please go ahead. So what is the status of PMC or MC after completion of term but before elections for new committee takes place, as elections are now suspended till 30th September for societies more than 250 members? Okay. PMC, Provisional Managing Committee.
ड्यूरेशन कार्यकाल निर्धारित किया हुआ है 1 ईयर के लिए, पर वो 1 ईयर का ये मतलब ये नहीं है कि आप पीएमसी की चेयर पे हो, 365 डेज हो गया, सडनली कुर्सी छोड़ो, ऑफिस लॉक करो और चले जाओ, सारा जो कार्यभार है, पानी का खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, वगैरह वगैरह, बिजली का बिल है, वो बंद कर दो क्योंकि मैं अथॉरिटी में नहीं हूँ. That would constitute a criminal offense also. Now, what is to be done? Till you actually documentarily hand over charge of the society affairs to the new incoming elected MC or to the authorized officer or to the administrator appointed by the DR's office, you are bound to continue after your term has concluded as a caretaker committee till you hand over. Same applies to an MC also. So caretaker, what difference does it make from regular and caretaker? Caretaker committee after its tenure may hold back certain decisions like major capex, then it will not be able to do it. But caretaker committee as the provisional managing committee has got literally all the rights except major decisions. Like going for repairs or something. Going for conveyance, going for redevelopment. A caretaker committee is tenure is expired. So an expired tenure committee member will not be able to sign the conveyance deed. Okay. Expired committee, tenure committee will not be able to sign the redevelopment agreement. So authority in power only, authority in power, that is in charge. जैसे आपने negotiable instrument act में कैसे लिखा हुआ है, 100 section 38 में in charge director. Companies Act में भी in charge लिखा हुआ है. And there are other acts, income tax में भी. तो वो जो in charge component है, वो caretaker का suspend हो जाता है. But he is liable to do all the functions except certain policy making decisions, majority decisions. Can they approve expenses also before a general body for 1 lakh rupees post? Yes, sir. They can definitely do that. The developer appointed as per section 79A was removed as at the AGM due to delay. Later on, general body meeting revokes termination. Is it necessary to again go for 79 ODL? Once a component has expired or finished, then it loses its legal significance. So developer को appoint किया 79A के तहत में, 79A के तहत में और हाई कोर्ट के जजमेंट्स के तहत में आपने डेवलपर को रिवोक कर दिया. नाउ कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अदर एक्ट्स आल्सो. आपने वो रिवोक कर दिया. रिवोक करने का कंडीशन जो क्राइटेरिया रहा होगा, ऑटोमेटिकली इट मींस इट मस्ट बी ए वायलेशन ऑफ 79A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड वेरियस अदर एक्ट. जैसे बीएमसी का एक्ट है, वायलेशन किया उसने, आईओडी लेकर आ गया पर काम नहीं शुरू किया, आईओडी लैप्स हो गया एंड सो. So the whole process will have to be restarted. Okay. So, interest received on FD with cooperative bank is not allowed under income tax under 80P2D. Well, you people are the better authorities to that aspect, but I will put in my perceptions. Interest received from cooperative to a cooperative entity is exempted. एक cooperative society, अनिल cooperative society, दूसरा है सुनील cooperative society. Cooperative society बोल रहा हूं मैं. I am not talking of credit society. I am not talking of cooperative bank. Those are not housing societies or societies in the real meaning of the sense cooperative societies. Like MDCC or something. हाँ जी. तो अगर आपको उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट आ गया उसके अंदर. जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे, यू कैन इन्वेस्ट योर सिंकिंग फंड इन बगल वाला नेबर सोसाइटी एंड अर्न इंटरेस्ट आउट ऑफ इट, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड. बट इफ यू इन्वेस्ट इन ए कोऑपरेटिव बैंक, इफ यू इन्वेस्ट इन एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इफ यू इन्वेस्ट इन ए मिल्क सोसाइटी, ये पॉसिबिलिटीज है, टेक्निकल नहीं है, एक्चुअल पॉसिबिलिटीज है. वहां से जो इनकम आ रहा है दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज एन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. It is registered only as an entity under the Cooperative Act, but it does not confer any cooperative spirit in that.
तो कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव आ रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव एंटिटी टू कोऑपरेटिव एंटिटी आ रहा है, वो एक बिजनेस एंटिटी हो गया, कमर्शियल एंटिटी. आई थिंक दैट दिस सेम क्राइटेरिया इज रिफ्लेक्टेड इन दैट. आपका एपोलेट ट्रिब्यूनल का नाम क्या है? ए आ रहा है आई थिंक सो. ITAT. ITIT, correct. But ITAT is allowing, but the CPC is not allowing. मतलब आगे litigation कर रहे हैं तो निकल जाते हैं. AGM is not conducted by the society for 10 years. Neither books of accounts are maintained or audited. What to do? If it is so, then the current duly elected committee has to put up an application to the DR to appoint AO, who will appoint, the AO will now appoint government auditor based on the banking records of last previous 10 years, that is reverse engineering, and prepare the balance sheets or write off the balance sheet. But this is possible only by a government auditor, not by a statutory auditor like CA or panel auditor, but it can be done. So once that report is in front of you, you may start afresh. And if balance sheets are possible, then under the presiding officership of an AO, these balance sheets can be passed and proceeded further. अभी 10 साल का बैलेंस शीट नहीं आया है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ से मिलेगा? तो वो सर्टिफाई करने का काम या इम्यूनिटी ग्रांट करने का काम आपको गवर्नमेंट ऑडिटर कर देता है 81(6) के अंदर में. If a society is made in November 20, March 21, the accounts should have been audited or not audited, not required. FY to FY आपको अकाउंट्स बनाना ही बनाना है. आपने कंट्रोल लिया हुआ है 28 फरवरी को और आपके पास 1 महीना है, पर आपने कंट्रोल तो ले लिया हुआ है. तो 1 महीने में जो भी खर्चा हुआ है, जैसे आपने मानो 28 आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी ऑफ द ईयर है और बिल्डर ने आपको 1 मार्च को हैंडओवर कर दिया है, तो 1 मार्च से जो अथॉरिटी आपको है खर्चा करने का, उसका अकाउंट्स आपको ऑडिट तो करवाना ही करवाना है और एजीएम में पास करवाना है. आप ये नहीं बोल पाओगे कि मैं 12 महीना प्लस 3 महीने का प्लस 1 महीने का ऑडिट करा के 13 महीने का ऑडिट में कराऊंगा और पास कराऊंगा. अगर ये करना भी है तो फिर डीआर के पास में अप्लाई करो, वो एओ अपॉइंट करेगा और वो सारा खर्चे वाला प्रोसीजर आपको फिर से करना है. Is it necessary to obtain feasibility report under each progressive DCPR? I have not understood this question. Feasibility report from a registered architect or from a PMC? DCPR, I think. That is development control rights, जो अभी लगता है डेवलपमेंट्स के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए. He might be wanting to know the major repairs component, or maybe while extending 2 or 3 existing floors in an existing building. Question is not clear, sir, and I have not understood. Okay, I'll try to contact him. And yes, sir. Any tax in Mumbai is collected from members. Any tax, non-agricultural tax, billable from the Tehsildar's office on the plot of land. It has got no concern with the structure constructed on that plot of land. So any tax, आपका प्लॉट एरिया मानो 100 स्क्वायर फीट का है और आपको तहसीलदार बोलता है कि ये ईयरली आपका एनी टैक्स 1000 रुपए है और आपके वहां पे 100 मेंबर हैं, तो 100 मेंबर के बीच में ये 1000 रुपए एनी टैक्स इक्वली डिवाइड होगा. But there was some suspension between, the collection has been suspended or something. The former, I can say former only, former revenue minister did say that we are tentatively suspending it and this will be reconsidered. But this does not mean that it will be condoned off or that it will be this bills or orders or notices will be quashed. Because if it is done, my view, it is done, it will be a gross revenue loss to the government. अभी आपने
आपके CHS के लिए मांग की। नेक्स्ट ऑब्वियस आपका मांग होगा दूसरे सोसाइटीज के लिए। नेक्स्ट ऑब्वियसली आपका मांग होगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट आएगा एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। तो एक आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, तो वो आप उसी प्रेसिडेंट को रट्टा लगा के क्लेम कर करके बाकी सब जगह भी करते जाओगे, एंड कोर्ट विल हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट बट टू ऑनर दोस प्रेसिडेंट्स। जय चंद्र मिस्त्री सर, बिफोर दैट आई विल सजेस्ट कि ये एनी टैक्स का नोटिस को अमाउंट को इग्नोर ना करते हुए बैलेंस शीट में प्रोविजन बना के रखें। यस सर, प्लीज गो अहेड सर। Jay Chandra Mistry sir, if you are can question, can you hear me? Yes please, yeah, we can hear you. The society was in the process of redevelopment and the feasibility report was taken from the PMC in the initial stage, and 79A procedure was followed. And after a long period, the developer did not do any progress. So appointment was terminated by the general body. Later on, again after some negotiation, society wants to proceed again with them, and they revoke the resolution of termination. Now some of the members are, after introduction of 2034 DC rules, one of the members is saying that to obtain a fresh feasibility report under new rules. The society has got a contention that once I have initiated the procedure of 79A, at that time we have already obtained the feasibility report and proceeded. So every time it is not necessary or it is not possible to go for a feasibility report. So what is the legal position? Well, you said that you appointed Anil Sharma as your PMC. Correct. He submitted feasibility report. Correct. Based on that, you appointed Rakesh as your developer. Am I correct? Then later on, the society terminated appointment of the developer. Yeah, correct. And then later on, you said now the society wants Rakesh again to be your developer. Correct, sir. Okay, this all, is like, अगर हम थोड़ा सा ह्यूमर डालें इसके अंदर, तो एक बनिया की दुकान का प्रोसेस हो जाता है। Correct. कानूनी प्रोसेस नहीं है। अगर ये कोर्ट में जाता है तो once an agreement has been terminated, okay, it loses its relevance for any and all purposes. Once a divorce has been granted, okay, then that divorce decree cannot be revoked. You have to file a fresh marriage certificate registration. Okay. अभी इसी को, अगर इसी एनालॉजी को आगे लेकर जाना है तो आपको एक बार आपने एक टर्म खत्म कर दिया, आपने 79A किया रहा होगा मानो उदाहरण के तौर पे 5-1 साल पहले। करेक्ट। 5 साल के बाद में 79A का जो क्राइटेरिया वो बदली हो गया। आई होप यू आर अवेयर ऑफ 79A ऑफ 2019। ओके, अब 2019 में पैरामीटर्स बदली हो गए। ओके। 79A इज बेस्ड इनडायरेक्टली ऑन डीसी रूल्स। ओके। जो भी मॉडिफाई हो गया हुआ है। But it is only a guideline. No, 79A is not mandatory. It is a guideline. If all the members are agreeing, or let us say 95% of the members are agreeing, then is it mandatory to go through that ordeal? You may not conduct the 79A by saying कि नहीं कि ठीक है वो तो खाली एक डायरेक्टिव है, और BHC बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि भाई डायरेक्टिव को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, एंड द जीपी कैन ओवररूल इट। बट आप उसी राकेश डेवलपर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने डॉक्यूमेंटरीली टर्मिनेट कर दिया हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया सर उसका। ओके। तो अब आप 79A करो या नहीं करो, आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दूसरे पीएमसी से लाना है, आपको दूसरा डेवलपर अपॉइंट करना है, और राकेश को फिर से करना है अगर, तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट बनेगा। So for that we are ready. The Rakesh has already given the fresh offer, and that is already, considered by the general body, and they are happy with it. So what is the problem? Rakesh has given fresh offer based on current DCPR. Yes, as per new DCPR, but with some fresh negotiations. And who will consider the fresh criteria? Criteria in the sense?
जो आपको फ्रेश टर्म्स कंडीशंस दिए हुए हैं, जिसको हम ब्रॉडली क्राइटेरिया बोलेंगे, वो किसको कंसिडर करना है? जीबी को कंसिडर करना है, एमसी को कंसिडर करना है? GB has already agreed to all terms and conditions. तो आप वो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल कर दिया, जिसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, नहीं, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, सी the draft DA was approved, but it was never executed. Adjudication was done, but stamp duty was not paid, DA was not registered. Okay. Anything which is not registered is null and void automatically, sir ji? So you cannot harp on it, you cannot capitalize on it, you cannot make it effective, you cannot make it enforceable. कानून तो वही कहता है सर जी. I'm not on enforcing the old offer. Now, under the new situation, let us say in the COVID situation, he has given a fresh offer. And the society is not able to find a comparative offer from any other developers. So they are saying that, okay, we are fine with him and we can proceed again. You may proceed, sir. You take an affidavit, consent affidavit from each individual, notarized consent affidavit, and attach it with your that is what MOU. That is what the members are going to do it. Individual consent in favor of the developer duly notarized in the general body meeting, a special general meeting. नोटरी के लिए नोटरी के पास में जाना पड़ेगा, नोटरी या तो नोटरी को बुला लीजिए. अगर 100% कंसेंट है तो भी आपको फ्रेश एग्रीमेंट, फ्रेश स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा. Notary will come to the meeting. Yes, sir. Okay, Mr. Kothari, anything else? Any other questions? Welcome, sir. No, sir. In chat box, I think all the questions have been answered by you, and I appreciate your patience and the words. आपकी आवाज बहुत लो आ रही है सर. बहुत लो है. Hello. Hello. You can hear me, sir? बहुत लो आवाज आ रही है. आ तो रही है. Now, full volume. Okay, you can go ahead. Go ahead, sir. Now I request CA Aditya Maheshwari to give vote of thanks on behalf of AOSC. Yeah, thanks Jitendra for giving opportunity to give a hearty vote of thanks to Hemant Agarwal sir. He had very patiently gone through all the provisions applicable for EGM societies and generally, and he also touched upon what generally the disputes arise between members and the various committee members. And so, and he has given a section wise where what are the remedies which are available to us. So on behalf of Andheri Oshiwara Study Circle, I propose a very hearty vote of thanks to Hemant Agarwal sir. And we look forward to hear from you in future also. And we also thank the core convener and the deputy convener for organizing this event at the short notice. And we thank you sir for accepting it also on a short notice. So thank you, and thank all the members for joining on a Saturday afternoon in large numbers. Yeah, and over to Jitendra. I have an announcement. Thank you, Aditya. I have an announcement that we have Central Council member election on 16th or 17th September. So I request member to cast their vote in large number. Thank you, sir. Thank you, Hemant.